Hello everyone. In this chapter, we'll be dealing with the second part of chapter 4 history, which is thinkers, beliefs, and buildings. So, the topic which we'll be starting with is the Buddha and the quest for enlightenment. So, in the previous video, we discussed a little bit about Jainism. इस वीडियो में हमारा फोकस होगा on Buddhism. So, Buddhism is referred to as the fourth greatest religion in the world. So, Buddhism received the patronage of kings like Ashoka. So, patronage का मतलब होता है to receive any sort of aid या support. इसका मतलब सिर्फ फाइनेंशियल एड ही नहीं होता बट किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस. तो जब उसको किंग्स की पैट्रनेज मिली उसका मतलब किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग विच हेल्प्ड इन द प्रोपगेशन ऑफ दैट आइडिया और ऑफ दैट डॉक्ट्राइन. So Buddhism spread to a number of countries including China, Korea, Japan, Myanmar, etc. So in this case हमारे पास sources of reconstruction क्या हैं. First we have the Buddhist text जिनसे हमें Buddhist tradition के बारे में पता चलता है. So ये Buddhist text analyze किए जाते थे. They were translated because of which we could get a lot of information about the tradition. Then the second important element which we have is hagiographies. Hagiographies basically होती हैं biographies of a religious saint or a religious leader. तो इनमें बेसिकली लिखा जाता है अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द सेंट्स या उनकी प्रेज में लिखी जाती हैं ये. एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न ये ज़रूरी नहीं होता कि जो भी इनमें लिखा गया हो वो सच हो. देर आर हाई चांसेस रादर कि इनमें काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स की जाए. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रशस्तीज विच वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2. Nevertheless, they are an important source for reconstruction of the Buddhist tradition. इनसे हमें पता चलता है कि Buddhist tradition के followers किस तरह के rules follow करते थे या किस तरह से रहते थे. तो इन्हीं tradition से हमें पता चलता है that who was Buddha. So the real name of Buddha was Gautam Siddharth. Gautam Siddharth was basically a Kshatriya prince of the Shakya clan. तो शाक्य क्लैन के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था इन चैप्टर 2. सो गौतम सिद्धार्थ वॉज द सन ऑफ शुद्धोदन हु वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु. कपिलवस्तु जगह है नेपाल में. सो गौतम सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी विच इज़ अ प्लेस इन नेपाल. So you guys might be familiar with the story of Buddha. However, I'll briefly mention it. Siddharth had a sheltered upbringing, which means कि उन्होंने सिर्फ kingdom की life देखी थी and not the life outside. तो एक दिन he went outside. तो उन्होंने देखा that people are suffering from a lot of problems. For example, old age, poverty, illness, etc. So he was really shook. But then he saw one mendicant. Mendicant का मतलब होता है beggar. But not beggar in the sense which we see today, but basically भिक्षुक जिन्हें कहते हैं हम. These are people who belong to a religious order. They do not own any sort of property, but they survive off the alms which are given as donation. तो जो भी उनको donation में दिया जाता है, they survive with the help of that. तो when he saw this mendicant, उन्होंने देखा that he had come to terms with ओल्ड एज डिज़ीज़ एंड इवन डेथ. दैट इज़ उनको किसी भी तरह की कोई भी सफरिंग या सॉरो नहीं था. सो ही डिसाइडेड टू लीव दिस रॉयल लाइफ और उन्होंने डिसाइड किया दैट ही विल गो इन सर्च ऑफ ट्रुथ. सो ही लेफ्ट द पैलेस एट द एज ऑफ 29 एंड फाइनली इट वॉज एट द एज ऑफ 35 दैट ही रिसीव्ड एनलाइटनमेंट in Bodh Gaya under a peepal tree, and this is the time when he became Buddha. So Bodh Gaya is a place in present day Bihar, which corresponds to the area of Magad which we've discussed a couple of times. तो बुद्ध ने जो अपना पहला sermon दिया that was in Sarnath, which is Banaras. तो इनिशियली एनलाइटनमेंट पाने के लिए या निर्वाण पाने के लिए ही ट्राइड एक्सट्रीम मेथड्स, जिसमें वन ऑफ द मेथड इज़ बॉडीली मॉर्टिफिकेशन. बॉडीली मॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है टू पनिश योर सेल्फ फिज़िकली. सो दिस इंक्लूड्स एब्सटेनिंग फ्रॉम फूड, दैट इज़ या तो आप खाना नहीं खाते, दैट इज़ एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ फास्टिंग, और यू हिट योर सेल्फ विद whips और straps. But later he gave up these bodily mortifications, these practices of bodily mortifications, and finally meditated for several days and attained enlightenment at Bodh Gaya. So now let's move on to the next topic.
So let's briefly discuss that what were the causes for the rise in Buddhism. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैदिक राइट्स थे दे वर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड दे वर एक्सपेंसिव. सो वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे एंड दे वर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी. फर्दर जो वैदिक टेक्स्ट थे दे वर रिटन इन अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. ऑन द अदर हैंड बुद्धिज्म प्रोवाइडेड फॉर अ सिंपल डॉक्ट्राइन and the language used for the Buddhist text was also extremely simple, which was the Pali language, जो कि होती है the language of ordinary people. Further, Vedic era के case में we have seen that there was prevalence of caste system and caste system को बहुत ज़्यादा importance दी जाती थी because of which there was domination of Brahmins in the society. So people who belonged to lower castes did not like this. So Buddhism में ऐसा कोई caste system नहीं था. So people thought of joining or following this tradition. So these were the main three causes for the rise in Buddhism. Also Buddhism rose because of the royal patronage which was given to the religion by kings like Ashoka. The next we come on to the method which was used for Buddhist teachings. So Buddha ने जो मेथड यूज़ किया दैट वाज बेसिकली ओरल मेथड, जिसमें थिंग्स वर टॉट थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस. तो जो भी हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो लिखे गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध. सो आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध जो भी ये डिस्कोर्सेस हुए, जो भी डिस्कशंस डिबेट्स होती थी या जो भी टीचिंग्स थी ऑफ बुद्ध, दे वर कंपाइल्ड इन बुक्स विच केम टू बी नोन एज त्रिपिटक्स. Three Pitaks are on the same footing as that of Ved in Hinduism. So the three Pitaks which we have are Vinay Pitak, Sut Pitak and Abhidhamma Pitak. So Vinay Pitak consists of the rules and regulations of the people who joined the Sangh. तो जो भी monks and nuns थे वो जिस तरह के rules and regulations को follow करते थे, they are mentioned in Vinay Pitak. Sut Pitak deals with the teachings of Buddha. So Sut Pitak is the most important of these Pitaks. Then Abhidhamma Pitak deals with philosophical matters. Then other Buddhist texts include Deepavams, Mahavams, etc. इनमें basically है the regional histories of Buddhism. So ये जो लिखा गया है these are written in Pali language. So Deepavams, Vams का मतलब होता है lineage या Vams का मतलब होता है a genre of ancient or medieval literature. एंड मोस्टली बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़म के केस में वम्स वर्ड को यूज़ किया जाता है एज अ सफिक्स इन सर्टेन टेक्स्ट्स. तो द वर्ड वम्स स्टैंड्स फॉर क्रॉनिकल एंड दीप की हिंदी फॉर्म है द्वीप विच इज़ एन आइलैंड. सो दीप वम्स व्हेन लिटरली ट्रांसलेटेड इज़ द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड एंड महावम्स व्हेन लिटरली ट्रांसलेटेड इज़ द ग्रेट क्रॉनिकल. सो ऐसे कुछ रीजनल टेक्स्ट भी हैं बुद्धिज़्म के जिनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द ट्रेडिशन. And a lot of Buddhist texts are preserved in the form of manuscripts, and ये manuscripts हमें मिलती हैं in monasteries in different parts of Asia. So this is all about the Buddhist texts. Now let's move on to the next topic, which is a very important topic, that is the teachings of Buddha. So as we've discussed, the teachings of Buddha are mentioned in the Sut Pitak. Now one thing important to note is that Buddha tried to convince people through reason and persuasion. That is, उन्होंने लोगों को ये नहीं दिखाया that he has some supernatural powers, but उन्होंने try किया कि लोग logic से convince हों. Another important thing to note is that Buddhism is silent on the existence of God. That is, ना वो ये कहते हैं कि God exist करते हैं और ना वो इस बात को deny करते हैं. So the first important subtopic which we have to discuss is the three marks of existence, that is त्रिलक्षण जिसके बारे में बुद्धिज़्म ने बात करी है. So the first is anicca, the second is anatta and the third is dukkha. So let's discuss what these terms are. So the first term which we have is anicca. So a का मतलब होता है non, nicca का हिंदी word है नित्य which means daily or constant, continuous या permanent. So anicca means which is not permanent, which is changing constantly or which is transient. So Buddhism believed that the world is transient. That is, nothing in the world is permanent. So the second term is anatta. An means without.
अत्ता का हिंदी टर्म है आत्मा, सो अनत्ता विच मीन्स विदाउट सोल। तो जैसे जैनिज़्म में वी टॉक्ड अबाउट दैट दे बिलीव कि जो सोल है दैट इज़ इमॉर्टल, विच मीन्स कि सोल कभी भी नहीं मरती, बट इन द केस ऑफ बुद्धिज़्म दिस इज़ नॉट द केस। बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि देयर इज़ नथिंग इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ परमानेंट, which goes on to say that even soul is not permanent. And the third term is dukh, which we all know, which means sorrow. So Buddhist ideology के जो core principles हैं वो यही हैं that the world is transient, there is nothing which is permanent in the world, and people who do not know this, they are full of sorrow. Then Buddhism talks about the four great truths, which is that the world is full of sorrow, और इस sorrow का main cause है desire, that is लोगों की इच्छा. The third truth is that the sorrow or pain can be reduced only when you can control your desire, and the fourth truth is that all of this can be achieved by following the eightfold path. This is extremely important. So the eightfold path include first, right faith, right thought, right action, right livelihood, right efforts, right speech, right remembrance, and right concentration. So Buddhism believes that when this desire ceases, rebirth ceases, and nirvana, which is enlightenment, is attained. So by following the eightfold path, you are freed from this cycle of birth, death, rebirth. So one last important aspect of the Buddhist philosophy is that they believe in the principle of ahimsa, जो हमने जैनिज़्म के केस में भी डिस्कस किया था. So this is all about the teachings of Buddha. Now let's move on to the next topic, which is the followers of Buddha. तो अब जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे, they formed संघ, and संघ में there were monks as well as nuns. So these monks and nuns, they became the teachers of Dhamma, which is dharma or righteous conduct. तो अब initially संघ में only men were allowed, that is there were only monks. However, with the intervention of Anand, who was one of the disciples of Buddha, even women were allowed in the Sangh. So the first woman who was ordained as a bhikkhuni, या who became a part of Sangh, was Mahapajapati Gautami. Now she was the foster mother of Buddha. Foster mother वो होती है जो बच्चे को पालती है, that is not the biological mother but someone who raises the child. So some of the women who joined the Sangh became Theris, which are respected women who had attained liberation. One thing important to note is that ये जो संघ था इसमें लोग आते थे from diverse social backgrounds. As we've already discussed कि बुद्धिज़्म के केस में the caste system was not followed, so people who were dissatisfied with the existing religious practices, they joined the संघ. तो संघ में there were different kinds of people, for example kings, wealthy men, workers, slaves, artisans, etc. However, one thing important is that जब ये संघ के मेंबर बन जाते थे, everyone was considered equal, that is there was an egalitarian society. किसी भी तरह की differentiation नहीं की जाती थी on the basis of social backgrounds. Another important point to note is that जो संघ की फंक्शनिंग थी दैट वाज डेमोक्रेटिक. सो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था दैट वाज थ्रू डिस्कशंस, एंड अगर डिस्कशंस फेल हो जाती थी देन देयर वाज वोट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो लास्टली द इम्पोर्टेंस वाज नॉट अटैच्ड टू कास्ट बट ऑन वैल्यूज़ लाइक मत्ता विच इज़ फेलो फीलिंग एंड करुणा विच इज़ कंपैशन. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.